Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, in this year RRB notification, we all observe that in some states vacancies are very, very less. And in some states vacancies are comparatively higher. Now, the states where vacancies are less, the candidates in these states are now feeling cheated. They feel that injustice is done with them. They all were preparing, but all of a sudden, due to low vacancies, now they are not able to decide what is to be done. So, in this video, I will discuss various aspects and take your decision based on your circumstances. In normal course, I always insist one should apply from his or her own state. And the logic behind that is, being RRB state level banks, you can never come back to your own state because interstate branches are not available, so there is no possibility of any transfer to your state. This is one basic factor that is to be kept in mind while deciding the state from where you should apply. But on the other side, when there are negligible vacancies, there is no vacancies, so the candidates are forced to take the second, you can say, step. That second step is you need employment, maybe anywhere. So if you are in second stage where you are only looking for employment and you are not bothered whether you will come back to your own state or not, because that possibility is not there in the RRB, so you can decide about applying from the other states also. So in case of this notification, I am modifying my suggestion, because if we remain strict on our suggestion that only apply from your own state, you may not get the job. So if the priority is job, naturally you have to pick a state where you can get the employment at the sacrifice of certain comforts. So what should be the criteria of selecting a state other than own state if vacancies are negligible or no vacancies in your state? First thing, you should always look for the nearness to your state, so that on subsequent time it is easier to travel between your native place and that state. This can be one criteria. Second can be the food habits, where you can adjust with the food habits. Third can be number of vacancies. Fourth can be the knowledge of that language, and if you are not having knowledge of that language, whether you will be able to crack LPT in scheduled time, that should be the criteria. So after putting these 3-4 things in your mind, you can decide about some state from where you should apply. Other state means discomfort. This you have to keep in mind. If you are comfortable with discomfort and at present your priority is to get the job anyhow, then there is no second option left other than to apply from another state. Although I am not in favor of that, but this notification has forced each one of us to rethink on our stand. So this is my opinion. If you have adequate vacancies in your own state, go for it. If there are negligible vacancies and very less vacancies in your state, you can reconsider applying
from other states. But if there is a minor variation or there is some variation, I think that you should tilt towards your own state. That is my opinion. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। जो इस बार का आरआरबी का नोटिफिकेशन आया है वो बहुत ही अजीब है। कुछ स्टेट्स में वैकेंसीज ज़्यादा हैं, कुछ में बहुत कम है या नेग्लिजिबल है, और इसकी वजह से काफ़ी कैंडिडेट जो मेहनत कर रहे थे उनकी आशाओं पर पानी फिर गया। काफ़ी निराश है कैंडिडेट, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, और इसीलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं कि क्या किया जाए। हालांकि आप सब लोग अवगत हैं कि मेरा स्टैंड बड़ा क्लियर होता है कि मैं आपको कहता हूँ आप अपने ही स्टेट से अप्लाई करें। उसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि आरआरबी स्टेट लेवल बैंक है, तो कभी भी आप अपने स्टेट में नहीं आ सकते क्योंकि वो आपकी ब्रांच ही नहीं है आपके स्टेट में उस बैंक की। इसलिए हमारा हमेशा ये सलाह रहती है कि आप अपने स्टेट से ही कोशिश करें, वहाँ पर पोस्टिंग हो। पहला काम होता है जॉब मिलना, दूसरा होता है कंफर्टेबली उस जॉब को निभा पाना। पर क्योंकि अब कई स्टेट में वैकेंसी ही नहीं है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी आपको ओपन करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए नौकरी पाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके मुकाबले कि वो अपने स्टेट में कंफर्टेबली रहें। ऐसी स्थिति में ऐसे कैंडिडेट क्या करें जब उनके स्टेट में वैकेंसी नहीं है? तो निश्चित तौर पे उनको दूसरे स्टेट से अप्लाई करना पड़ेगा, और जो हमारी अभी तक की धारणा थी कि अपने ही स्टेट से अप्लाई करें उससे डेविएट करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कमस्टांसेस के अनुसार मनुष्य को बदलना ही पड़ता है। तो यदि मुझे दूसरे स्टेट से अप्लाई करना है तो मैं किन बातों का ध्यान रखूं? पहला मेरा मानना यह है कि आप डिस्टेंस को ध्यान में रखिए कि आपके स्टेट से उस स्टेट का कितना डिस्टेंस है, कितना आसानी से आप अपने स्टेट में आ जा पाएंगे वहाँ से। क्योंकि जहाँ आपकी जड़ें हैं वहाँ आप आओगे तो है ही ना, फैमिली फंक्शंस भी होंगे, माँ बाप भी होंगे, तो डिटैच तो नहीं हो सकते दुनिया से। तो वो कितना कंफर्टेबल है, किस तरह की कनेक्टिविटी है उन स्टेट्स की आपके स्टेट के साथ, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ होता है खाना पीना। कई बार हम किसी भी स्टेट में चले जाते हैं, वहाँ का जो खाना पीना है उसमें से हम एडजस्ट नहीं कर पाते और बीमार पड़ जाते हैं। तो ये भी आप ज़रूर दिमाग में रखें कि जो मेरा खाने का तरीका है और जिस स्टेट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्या वहाँ के खान पान के साथ मैं अपने को एडजस्ट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तीसरा क्राइटेरिया नंबर ऑफ वैकेंसीज हो सकता है, कहाँ पर अच्छी वैकेंसीज हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन अच्छी है, वो तीसरा बिंदु आपको ध्यान में रखना है। और चौथा बिंदु आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं क्या उसकी भाषा आपको आती है। नहीं आती है तो क्या आप गिवन टाइम में उसको सीख पाएंगे, एलपीटी को पास कर पाएंगे? क्योंकि आरआरबी में एलपीटी बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। एलपीटी किन पे लागू है इसमें मैंने अलग से वीडियो डाली है, उसको सुन लें, क्योंकि नहीं तो रिपीटिशन हो जाएगा हर वीडियो में सेम बातों का। तो ये 4 बिंदुओं पे ध्यान देकर ही आप स्टेट का चुनाव करें। मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करता कि ए स्टेट चूज़ कर लो, बी स्टेट चूज़ कर लो, क्योंकि हर कैंडिडेट की अलग रिक्वायरमेंट होगी, उसको अलग ढंग से अपना स्टेट चुनना है। तो यहाँ पर मैं डेविएशन कर रहा हूँ अपनी लॉन्ग टर्म थिंकिंग से। मेरी लॉन्ग टर्म थिंकिंग हमेशा रही है, अगर आपको कंफर्टेबल रहना है लाइफ में, अपने स्टेट से ही अप्लाई करें। पर इस बार आरआरबी आपको मजबूर कर रही है कि आपको स्टेट से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि कई स्टेट में तो वैकेंसी बिल्कुल नेग्लिजिबल है। या तो वो छोड़ ही दें इस एग्ज़ाम को, या फिर दूसरे स्टेट से अप्लाई करें। तो जो मेरे व्यूज़ हैं वो मैंने आपको दिए। आपको फैसला अपने सर्कमस्टांसेस पे, अपने विवेक से करना है, क्योंकि ये आपके कैरियर का सवाल है। गॉड ब्लेस यू ऑल।